के निदेशक एवं देश भर से जुड़े हुए सभी मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्सव मनाने के लिए बीस दिन का लगातार कार्यक्रम देश भर में चलेगा। क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के साथी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ मुख्यालय पर भी कार्यक्रम करेंगे। उसी के तहत आज माननीय कुलपति 20 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी ये इच्छा है कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, मना भी रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक जो संकल्पना है भारतीय संस्कृति की, भारतीय दर्शन की, भारतीय जीवन मूल्य की, वो किस प्रकार तमाम विविधता के बीच एकता स्थापित करती है और वो बताती है कि तमाम विविधताओं के बीच भी भारत एक है। भारत इसीलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पर विविधताएं किसी प्रकार का कोई खंडित व्यक्तित्व सामने लेकर नहीं आती हैं, बल्कि यहाँ विविधताएं एक मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं, एक मुकम्मल चेहरा बनाती हैं भारत माँ का, हम सब का। और हम सब कहीं से भी मिलें, किसी भी हिस्से के हों भारत के, हम मिलते हैं और हमें अलग से अपनी भारतीयता की पहचान बतानी नहीं पड़ती। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मूल इच्छा है, उसमें जो संकल्पना है वो यही है। तो आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं निवेदन कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय का कुल गीत बजाया जाए और आप सब उसके सम्मान में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप सबसे निवेदन है विश्वविद्यालय का कुल गीत बजाया जाए। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब
विश्वविद्यालय के कुलगीत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मित्रों, माननीय कुलपति जी जब से विश्वविद्यालय में कुलपति होकर आए और बल्कि जब उनका पिछला कार्यकाल था तब भी उनका बराबर इस बात पर बल रहा कि पाठ्यक्रमों की निर्मित ऐसी हो, विश्वविद्यालय की गतिविधियां ऐसी हों जहां पर भारतीयता दिखे, भारतीय जीवन दृष्टि दिखे, भारतीय जीवन मूल्य दिखे। और यह एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब हम इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं और आप सब इस बात से परिचित हैं कि लगातार कुलपति जी ने इसी दिशा में काम किया कि हम जो हमारी एक भारतीय जो पहचान है वो बनी रहे और बल्कि और सुदृढ़ हो। और इस दिशा में उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बल दिया, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस की स्थापना की, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों के अनुवाद की शुरुआत कराई, संस्कृत और जैसे विषय में अध्ययन अध्यापन सुबह बहुत सारे ऐसे काम जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल मंशा को बल देते हैं, मूल मंशा को अग्रगामी बनाते हैं। ऐसा काम माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में संभव हुआ है। हमारे क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के साथियों का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज जो हम 20 दिवसीय कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें देश भर में जो भारत सरकार की इच्छा है कि पेयर बने हुए हैं राज्यों के, और उस पेयर के अनुसार गतिविधियां करके हम भारतीयता की भावना को आगे बढ़ाएं, भाषाओं के बीच के बंधुत्व को, बहनापे को आगे बढ़ाएं। इसमें क्षेत्रीय सेवा प्रभाग ही मुख्य भूमिका निभा रहा है। मैं अपनी बात रखने के लिए और इस कार्यक्रम को किस रूप में रखा जा रहा है इसके लिए क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत महापात्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत महापात्र जी। धन्यवाद। Very good morning to all of you, Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellors, Directors of the schools, Heads of the divisions, Chairperson and Nodal Officer of this campaign Ek Bharat Shresth Bharat, Professor Jitendra Kumar Srivastava ji, my colleagues at the regional centers, and all the distinguished participants. Today we are all gathered here in the morning to celebrate the inauguration of the Ek Bharat and Shresth Bharat week, which starts from 24th of February, that is today. I welcome you all to this inaugural session on behalf of the Regional Services Division and on behalf of my colleagues at the regional centers. All of us know that this Ek Bharat, Shresth Bharat is being celebrated under Azadi Ka Amrit Mahotsav. And this Azadi Ka Amrit Mahotsav was launched on 12th March 2021 as a 75-week countdown to the 75th anniversary of Indian independence, and will end on 15th of August 2023. We are all gathered not only in IGNOU but across the country to commemorate 75 years of progressive India's social, cultural, political, and economic identity after independence. The Ek Bharat Shresth Bharat concept, I personally believe, is deeply rooted in the Constitution of India, because I'm a student of Constitution of India, so I can vouch for it. Very first article of the Indian Constitution, Article 1 of the Indian Constitution says that India, that is Bharat, shall be a union of states. So the very concept of India, that is Bharat, is engraved in the Constitution of India. And today, when we are about to reach 75 years of independence,
we are celebrating Ek Bharat, Shresth Bharat. This was launched by the Honorable Prime Minister on the occasion of 140th birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, on 31st of October 2015. And this 31st October is also celebrated as the Rashtriya Ekta Divas. And the purpose is to enhance interaction and to promote mutual understanding through our states and union territories by pairing them and to foster, promote the cultural connect among them and between them. Now, various campaigns launched to foster the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat are the Bhasha Sangam, which is a unique initiative of Government of India to highlight the linguistic diversity in the country called Bharat. In our 8th schedule of the Constitution of India, there are 22 languages. And this Bhasha Sangam, which is a mobile app developed by the government and particularly the Ministry of School Education and Ministry of Higher Education, has a provision of all 22 languages in one platform so that you can have access to all the 22 scheduled languages of the country, the food festivals, the food habits, the cultural exchanges, youth festivals, and translations of books and scripts which are popular in states and union territories. The concept of Ek Bharat and Shresth Bharat has a vision and a mission. The mission is to celebrate the unity in diversity in India, to promote a spirit of national integration through structured engagement with all states in various spheres of the life, and to showcase India's rich cultural heritage, traditions, customs, values of each state and the people of India, and to establish long-term engagements between people residing in different parts of the country, and to create an environment of fraternity and brotherhood. That's the basic vision and mission of the concept Ek Bharat and Shresth Bharat. Now, various ministries, there are 12 ministries of Government of India which are involved in this mission. One is, of course, the Ministry of Education, which plays the pivotal role. Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Culture, Ministry of Tourism, Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, Ministry of Railways, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Ayush, and Ministry of Textile. These are the ministries which are involved in the entire process of celebration. Now, the celebration of this week called Ek Bharat and Shresth Bharat will highlight selected iconic activities during February, which starts from 24th of February, that is today. State and union territories, as Jitendra ji was telling in his opening remarks, are paired with each other. And they will also be highlighting the glimpses of India through the pairing. Events to be held over 20 days between 24th of February to 15th of March. But everywhere it will be done in a virtual mode because of the COVID and because of our promoting technology across the country. The guideline says that it will be done through a virtual mode. The higher educational institutions in each state will team up with higher educational institution in their paired state and conduct online interaction, and also they conduct various events. Now, IGNOU's regional centers in the paired states will coordinate for conducting the activities. Now, we have also paired our regional center in the same Ek Bharat, Shresth Bharat matrix
the education have done. Our regional centers will be coordinating, and one of the regional center will act as the principal coordinator among the various regional centers, along with solutions and regional centers in the paired states. Now, the final report after the end of the program. RC is to identify one higher educational institution. Each of the regional center engaged in the paired activities will identify one higher educational institution, be it a college, be it a university, and we have told them that you please pair up with higher educational institution where our learner support centers are located. So our students and the students of the regular colleges and universities will have exchange of ideas, and they will be doing events together. Students of the identified higher educational institution and RCs will team up. Activities will be conducted in virtual mode, covering diverse aspects of life, and each RC is supposed to conduct at least one activity in the next 20 days. If they conduct more than one activity, that is also welcome. But each RC in the paired groups are required and expected to conduct one such activity. And activities is to be shared by the RCs in the social media platform, and of course in the Ek Bharat, Shresth Bharat link which the government has provided to us. Now these activities can be related to themes on language, different languages, as I said, 22 languages, on culture, on sports, on tourism, on food habits, and the cooking styles of various parts of the country. Presentation of cultural troops by the states can be one such activity. Now, virtual tour of important historical places in the paired state can also be done through the virtual mode. And talk presentation by the lead industry experts, handicrafts of the states, sports persons who have excelled and brought India credit through various participations in Olympics and international events can also be invited to make presentations and encourage the young generation of the students. Now, these are some of the activities that have been highlighted. Already, some initiatives have been taken by the paired states. For instance, in Maharashtra and Odisha, which are paired, they have taken the lead in Digital Saksharata Abhiyan. They have initiated a Digital Saksharata, digital literacy program in Maharashtra and Odisha. Similarly, in Chhattisgarh and Gujarat, who have been paired, discovering the tourism and culture of Maharashtra and Chhattisgarh. Similarly, states in the northeast, like Manipur and Nagaland, they have been paired with Madhya Pradesh, and dance presentations have been done by the students of these states. Assam and Rajasthan, and they have done indigenous sports talks for the state of Assam and Rajasthan. The traditional sports of both the states have been projected and highlighted and discussed in the Ek Bharat and Shresth Bharat. Friends, this is a very, very historic moment for all of us, because we are not only participating in a national event, but are our own regional centers with other regional centers across the country. We are pairing for the first time officially with the students of regular universities and higher educational institutions in other states. And I do hope that this pairing will bring out not only a lot of exchanges of ideas, but exchanges of information among the students, faculty, and our own colleagues. I wish this entire event from today till 15th of March a grand success. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने बहुत विस्तार से बातों को रखा। मित्रों, एक दिन कुलपति जी ने मुझे बुलाया
और कहा कि जितेंद्र जी, हमें कुछ ऐसा करना है एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो सिर्फ कागजों पर न रहे, जो असल में दिखे और जिसका कोई मतलब हो, और उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन साहित्य संस्कृति को लेकर, भक्ति काल को लेकर एक पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी में बने और बाद में वो भारतीय भाषाओं में भी जाए। हमने वो कार्य शुरू कर दिया है, हिंदी और अंग्रेजी में मध्यकालीन साहित्य संस्कृति पर, मुख्य रूप से भक्ति काल को केंद्र में रखकर, जो कि भारतीय एकता को, सांस्कृतिक एकता को स्पष्टतः प्रकट करता है। वो काम शुरू हो चुका है माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से, और आज हम लोग 20 दिवसीय कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अन्य कार्यक्रम भी हम लोग कर ही रहे हैं लगातार। मैं बहुत आदर के साथ विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत, हम सबके अभिभावक माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर जी राव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने इस बृहद परिवार को आज इस अवसर पर संबोधित करें और मार्गदर्शन करें। आदरणीय कुलपति जी। छोटी सी बात बताऊं मैं, उधर कर लीजिए आप सभी को आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्घाटन के अवसर पर बधाइयाँ। हम सब एक ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो शैक्षिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि हम यूनिटी भी चाहते हैं और एक्सेलेंस भी चाहते हैं, एकता भी और श्रेष्ठता भी। एकता भी देश के लिए जरूरी है और श्रेष्ठता, हम लोग को आगे बढ़ना है। जो गति है उस गति को बढ़ाना है और श्रेष्ठतम तरीके से बढ़ाना है। उसके लिए जो भाषाई विसंगति है, भाषाई विसंगति को मिनिमाइज करना है। इसीलिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में पेयरिंग की गई है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोग एक और भाषा को पढ़ें, एक और भाषा के बारे में समझें, एक और संस्कृति के बारे में जानें। जब हमारी सबकी संस्कृति लगभग एक हो जाएगी तो अपने आप ही हम सब एक हो जाएंगे। जो बातें हम लोग बार बार सोच रहे हैं, विविधताएं बार बार सामने आ रही हैं, उसको हमें कम करना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बेहतरीन स्थिति में है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, विविधताएं हैं और एकता भी है। और उन सबको एक कौन कर रहा है? शिक्षा, भारतीय शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा। और हमारी शिक्षा किस तरह से है? दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से। अब हम शायद ऑनलाइन से भी बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब मिलके उस शिक्षा को विभिन्न भाषाओं में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हाल ही में प्रयास शुरू हुआ है जिसमें हम लोगों ने विभिन्न भाषाओं में लोगों से बात करने का प्रयास किया है, बच्चों से बात करने का प्रयास किया है, जो भाषाओं के बीच में दूरी थी वो कम करने का प्रयास किया है। एकता के लिए, ज्ञान की एकता, दक्षता की एकता, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था की एकता, हमारी संस्कृति की एकता। वैसे भी अगर आप देखें, जो अधिकांश पर्व हैं इस देश में मनाए जाते हैं, नाम भले ही अलग अलग हो हर जगह पर, लेकिन पर्व का समय लगभग एक ही होता है। अगर दशहरा उत्तर भारत में कुछ और मनाया जाता है तो बंगाल में दूसरी तरह से मनाया जाता है, उड़ीसा में दूसरी तरह से, दक्षिण भारत में दूसरी तरह से। 14 जनवरी के आसपास जो मकर संक्रांति है, उसको पूरे देश में अगर आप देखेंगे, उसके आसपास जो 2-3 दिन है, एक संस्कृति है, उसको अलग अलग रूप से परिलक्षित कर रहे हैं। और यह जो अलग अलग ढंग से हम लोग परिलक्षित कर रहे हैं, इसी को हम लोग को मिलाने का प्रयास करना है। उसमें अलगाव कहीं नहीं है, जुड़ाव है। उस जुड़ाव को हमें संस्कृति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, और अभी जो हम लोगों ने एक प्रयास तुरंत शुरू किया है, ये तो 20 दिन का कार्यक्रम है, इसमें जो आयोजन हो रहे हैं वो तो है ही है। उसके अलावा हम लोग एक पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं 6 क्रेडिट का, जो अंडर ग्रेजुएट के लगभग सभी बच्चों तक पहुंचेगा। और उसमें वीडियो भी बन रहे हैं, पाठ्य सामग्री बनेगी।
तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था में हम लोग डालना चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को जब सारे बच्चे देश के जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारी जो छात्र संख्या है वो लगभग 35 लाख है। अगर 35 लाख में हर साल 8 लाख बच्चे जुड़ते हैं और उसमें से कम 3 लाख 4 लाख 3.5 लाख अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं, उनको अगर हम एक पाठ्यक्रम के रूप में अवसर देते हैं कि पूरे देश में की संस्कृति, पूरे देश की जो एकात्मकता है उसको किस प्रकार से परिलक्षित करें, तो जो इस संकल्प का उद्देश्य है, राष्ट्रीय संकल्प का उद्देश्य, वो पूरा हो जाए। और अभी जो पहली बार हम लोग 20 दिन के लिए यह आयोजन कर रहे हैं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप, उसमें देख लें आसपास जो भी कल्चरल वेरिएशंस हैं या उसको किस प्रकार से हम एकीकृत कर सकते हैं, उस पर विचार करें, उस पर आयोजन करें। और उसके डिटेल्ड गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। इसमें एक ऐप भी बना हुआ है, उस ऐप का भी अधिकांश बच्चों में प्रयोग करें। शायद उसको जितेंद्र जी ने वेबसाइट पर डाल रखा है, उसको प्रोपोगेट करें तो बच्चों को बहुत सी जानकारी पूरे भारत के बारे में मिल जाएगी। अभी एक कल परसों एक मैप हमारे पास भेजा किसी ने, उस मैप में सिर्फ आप उस प्रदेश का नाम डालिए, उसके बारे में जानकारी आ रही है। यही है, हम लोग एक दूसरे के बारे में जाने तभी तो हम लोग एक होंगे। जब हम जानते हैं तो एक कैसे होंगे? एक दूसरे की संस्कृति को जाने, एक दूसरे की शिक्षा व्यवस्था को जाने, एक दूसरे की भाषा को जाने। इसीलिए पेयरिंग ऑफ द स्टेट्स भी आपके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग उस पेयरिंग को ब्लाइंडली फॉलो करें, उससे हटके भी कुछ ज्यादा पेयरिंग भी कर सकते हैं। उद्देश्य है कि हम लोग मिलकर के, जो बड़ा उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इसको मिलाने के बारे में हम लोग लगातार संकल्प करते रहे। डायरेक्टर आरएसडी ने संविधान से भी इसको जोड़ करके आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया है, जो हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक भी है और हम लोगों को आगे इस दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। हम लोग कार्य कर रहे हैं, करते रहे और बेहतर करें, और उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग का एक छोटा छोटा प्रयत्न पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास माना जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को इस अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार सर आपका इस उद्बोधन के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीकांत महापात्र जी से कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय श्रीकांत महापात्र। Thank you, sir, for giving us a roadmap and the greater vision and mission of this program, Ek Bharat, Shresth Bharat. I take this opportunity also to request our Honorable Vice Chancellor to release and inaugurate a very important document of Regional Services Division, which we call as the Standard Operating Procedure Center Activities. When I joined for my second term as director, I realized that there are many types of activities being conducted at 56 regional centers. Those 56 regional centers, they do these activities in 56 different ways. And I thought that since the National Education Policy talks about standardization and standard operating procedures, the institutional development of IGNOU, the NAC peer team, all of them are talking about having a standard operating procedure for the important activities of the university. Why not a document on standard operating procedure for the regional center activities? And with the blessings and support of the Honorable Vice Chancellor, we initiated the process 6 months back. All these senior regional directors
who are working in the field were given the responsibility to prepare a best document, be it on admission related counseling, academic counseling, be it on our assignment examination, on projects, on practicals, how to conduct ECP, how to conduct internship, how to hold seminars. Finance and accounts is a very important matter where the internal audit and the CAG audit points out a lot of procedural lapses. Monitoring of the learner support center, because we have almost 2,100 learner support centers now operating these activities of the learner support centers, the work centers, establishment of centers, appointment of coordinators, and redressal of the student grievances, which is one aspect of our activities at the field. So there are 16 different aspects on which a standard operating procedure best document was prepared by the senior regional directors. And these base documents were reviewed by 4 other regional directors. And then we gave it to another regional director to compile the feedback that has been obtained. And then one of the officers of RSD did the executive summary of all the 16, and it was placed before the 51st Student Service Committee meeting, which is a standard committee of the Board of Management, on 27th of January 2022. While approving the standard operating procedure, it was advised by the chairperson, Honorable Vice Chancellor, that these documents should be sent to all the directors of the schools, heads of the divisions, for their feedback and comment. So we immediately started sending it to the directors of the schools and heads of the divisions. And I am happy that we have received their feedback. And this feedback has really helped us in changing some of the concepts which are already there, because some corrections were suggested and these were incorporated. So finally the document was ready, and with the permission of the Honorable Vice Chancellor, today we request our Honorable Vice Chancellor to release this standard operating procedure, which is a 358-page document. And it cannot be, though I have a copy of this with me right now, but we are not giving it in a printed form to anybody. Once it is released by the Honorable Vice Chancellor, it will be uploaded in our website for not only for our regional centers and directors of the schools, but for all stakeholders also to know how IGNOU operates. And this is one of the important guideline and suggestion which the NAT peer team has given to us. So today I feel personally very satisfied that a 6 months hard work is yielding some results. May I now request our Honorable Vice Chancellor to kindly release this document on standard operating procedure for the regional centers functions. Sir, please. Sir, with your permission, should we release it digitally? लगता है सर वहाँ कुछ और भी एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ शायद है एक मीटिंग चल रही थी, शायद सर उसमें है। ओके, लग रहा है एक मीटिंग चल रही थी, तो 1 मिनट वहाँ फोन करना होगा शायद। मैं कर देता हूँ। ऑफिस में फोन करना होगा। मैं कर देता हूँ। आवाज तो नहीं आ रही मेरी।
Okay, we have obtained the permission of the Honorable Vice Chancellor for the digital release of the book Standard Operating Procedure for the regional center activities. May I now request for the technical team to start the process of digital release. Thank you, sir. Thank you very much for the release of this important document. Now, with this release, I request all the regional directors to have a copy. Of course, we'll send to all RCs through email today. And from now onwards, we expect that our regional centers, while taking decisions on these 16 vital matters, will refer to this manual and see to it that all guidelines which are prescribed in these manuals are being strictly followed. With this, if we do that, then we'll be able to standardize all our activities across the country. And it will be of great help to people who are joining as regional directors without having much experience of IGNOU activities. Thank you very much. नमस्कार, धन्यवाद सर आपका। एक निवेदन करना है सभी क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के साथियों से, सभी रीजनल सेंटर्स से, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित जो भी कार्यक्रम करें, गतिविधियां करें, वो एक मेल तो आरएसडी डायरेक्टर को करेंगे ही, एक मेल मुझे जरूर करें, क्योंकि इसे अपलोड कराना है भारत सरकार की वेबसाइट पर भी हमें। तो एक मेल अनिवार्य रूप से हमें जरूर करें, जैसे ही करें, एक रिपोर्ट के साथ, ब्रीफ रिपोर्ट के साथ, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में आप रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो जैसे भी मैंने पहले से बता दिया था, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी इज द चेयरपर्सन एंड द नोडल ऑफिसर of IGNOU for Ek Bharat and Shresth Bharat programs. His name has been communicated to the ministry because ministry wanted to know who is the coordinator and the chairperson from IGNOU. So his name has been communicated. So it is requested that whatever activities being done at the regional centers, a copy should be sent to Professor Jitendra Srivastav, Director International Division and the Chairperson and the Nodal Officer of Ek Bharat and Shresth Bharat celebration in IGNOU. Thank you.
धन्यवाद आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जुड़ करके इग्नू के लिए काम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधियों के लिए करेंगे। I'm most thankful for all of you to spare your valuable time in gracing this program. The School of Agriculture was established in 2005, but it started functioning after the recruitment of the faculty in